Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, finally we have reached to the last lecture of the economics, that is the economics for engineering lecture 27. So this is gonna be our last lecture officially, and in this video we are going to discuss about the internal rate of return, or you can say IRR. So friends, in the earlier video we have discussed a lots of concepts related to the payback period. Now completing our economics for engineering lecture, this is last lecture, and here we will discuss about the basic concept of IRR, and beside that we will basically learn some basic graph, and at last we will basically do some solved example guys. Okay, so this is basically complete agenda today. So before moving to the video guys, if you are new here to my channel, support and like this content. Okay, also share this with more of our friends, क्योंकि guys जैसा कि मैंने वादा किया था, before your exam I have completed this syllabus. Okay, so मेक श्योर टू सपोर्ट अस सो दैट मैं अदर सब्जेक्ट्स का भी लेक्चर बना सकूं. ओके, और आप अपना फीडबैक जरूर देते रहें. ओके, कमेंट करें या कुछ अगर सजेशन रहे अदर इकोनॉमिक लेक्चर मीन्स अदर अगर कोई सब्जेक्ट का भी लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई विल मेक दैट. ओके, सो दिस इज कंप्लीट थिंग्स आई वांट टू टेल. सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो गाइस. So first of all, internal rate of return or IRR. So what is actually meaning of IRR? So actually internal rate of return of cash flow pattern is the interest rate at which the present worth of that cash flow pattern reduced to zero. Okay, so it is basically internal rate of return. It denote basically how the present worth of cash flow reduced to zero. Means किस तरह से जो present cash flow है, means suppose cash flow अभी market में suppose 1000 है, तो how it is basically reaching to the zero margin. Okay, so that we call it internal rate of return. You can say that rate of return means what is the rate of basically returning that, okay, investment. So this imply basically IRR is that I for which NPV equal to zero. Means IRR को अगर alternative decision आप means definition कोई बोले कि क्या होगा alternative definition, then you can also say that it is that place where NPV or net present value is equal to zero. Means net present value आपका जब zero आ जाए, that we call it internal rate of return. Okay, so it also implies that PV of benefit equal to PV of cost at IRR. Remember guys, one of the very important, okay, and one of the MCQ may came from this particular part, that at IRR what is equal. So आपको ऑप्शन दिया सकता है PV equal to VI, another important thing, but आपको मार्क क्या करना है, PV of benefit equal to PV of cost. Okay, means present value of benefit equal to present value of cost will be equal at IRR. Okay, so indirect question भी आपको इससे पूछा जा सकता है. So this is basically basic idea of IRR or internal rate of return. Simply guys कुछ नहीं, just means how basically cash flow pattern is basically returning to zero. Okay, so let me understand the diagram. Okay, so diagrammatic representation of IRR guys. So suppose let me consider on x-axis discount rate and on y-axis NPV, which is basically denoted by S. Now this will be basically IRR. Okay, so you can clearly be like at starting point, or you can say that at this NPV is higher, but as soon as time, or you can say discount rate is increasing, so IRR is basically coming down. Okay, so this point, the point where basically we are getting the zero, reducing to zero, this we call as IRR. Okay, internal rate of return. Okay, so यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर point 0 पे आ रहा है, so that we call as IRR. So this is basically basic diagrammatic representation of IRR. अगर आपको definition पूछा जाएगा तो define IRR, then just define that things and just make the diagram guys. So that is enough for you getting the marks. Let me come to some of the important point that you should note for the IRR. So what is actually the some other things you should remember. So first of all, first point I want to tell that at interest rate, okay, means as interest rate will increase, NPV will decrease. So जैसे जैसे interest rate increase होगा तो net present value will be decrease. Okay, so you can also clearly visualize from the your day to day life too. अगर suppose कोई बैंक में है आपका, okay, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, सो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है मीन्स आपका क्या भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कह सकते हैं आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज द बेसिक थिंग यू कैन ऑल्सो बेसिकली कंसिडर. Now second point I want to tell that one has to start with intuitive value of I and check whether the present birth function is positive. Okay, so if so increase the value of I until NPV becomes negative. ओके, अगर किसी को भाई इनिशिएटिव वैल्यू निकालना रहा है, ओके, और वी कैन से इफ दे हैव टू स्टार्ट द इनिशिएटिव वैल्यू ऑफ आई एंड बेसिकली इफ दे हैव टू चेक द प्रेजेंट बर्थ फंक्शन इज पॉजिटिव और नॉट, सो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप आई को इस तरह से इंक्रीज करें, ओके, अंटिल एनपीपी विल बिकम नेगेटिव. मीन्स जब तक नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव ना हो तब तक उसको इंक्रीज करते रहेंगे. तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट यू शुड कीप इन माइंड. Now coming to point 3, that if NPV turn out to be negative, we will decrease the value of I until NPV become positive.
मतलब आप देख सकते हैं दोनों में क्या मीन्स एनपीवी अगर नेगेटिव जा रहा है तो उसको आप पॉजिटिव की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, एंड इफ इट इज गोइंग टू पॉजिटिव साइड देन यू विल basically try to make it in negative. Okay, so simply basic things I want to tell that we are basically moving toward the NPV or you can say our IRR where it must be zero. Okay, अगर नेगेटिव है भाई तो आप पॉजिटिव आने की कोशिश करेंगे so that it will become zero. Okay, again if it is in positive side then try to moving in the negative side so it will become zero. Okay, so this is basically point 2 and 3 they want to tell. Coming to next point, that the point 4, that the rate of return is basically determined by the interpolation method in the range of value of I for which the sign of present worth function changes from positive to negative. Okay, so interpolation concept I think मैथ्स वगैरह में पढ़े होंगे. Okay, so simply आप ध्यान रखें कि जैसे जैसे मीन्स अगर ज़्यादा हो गया इंक्रीज हुआ then we will basically go to the negative side, and if it is already negative side then we are basically moving to the positive side. Okay, so this is the basically complete things you should remember regarding the IRR. Let me come to one of the very important things, that project selection. So how basically project selection is going to happen in a business market or in a economic market. Okay, so in this method of comparison the rate of return for each alternative is computed. Means first of all for means doing comparison IRR you can say rate of return is basically in calculated, then alternative which has the highest rate of return is selected as the best alternative. Means जिसका भाई rate of return ज़्यादा रहे then company will select that option. Okay, so you can say that for getting the good approach, okay, or good approach will be those where the IRR will be higher. Okay, IRR means rate of return अगर higher रहेगा means आपका return ज़्यादा आएगा तो obviously guys that is a good condition. Okay, so we will consider only that which have the highest IRR value. Okay, so IRR must be greater than 0 for a, you can say economic feasible or for a good company. Let me come to one important difference related to the MARR versus IRR. Okay, so what is actually MARR? MARR basically is abbreviated from a minimum attractive or you can say acceptable rate of return versus IRR, that is the internal rate of return. Okay, so minimum attractive rate of return or you can say MARR is the minimum profit an investment और यू कैन से इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू मेक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट. सो कोई भी भाई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किया तो वो मिनिमम जो प्रॉफिट जो एक्सेप्ट करता है कि यार मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा. सपोज कोई पार्टिकुलर इन्वेस्टर 100 रुपीज लगाया तो वो अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मेरे को 120 या 130 मेरे को मिल जाएगा देन ही आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग दिस. सो दिस वी कॉल्ड MARR. ओके, so it basically taking into account the risk of investment and the opportunity cost of undertaking it instead of other investment. means यहाँ पर भाई अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो अदर फैक्टर को भी कंसिडर करना है सच एज द रिस्क. ओके, रिस्क एनालिसिस में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ रिस्क एनालिसिस किस तरह से करना किया जाता है. ओके, सो रिस्क एनालिसिस वगैरह अदर फैक्टर को कंसिडर करके ही MARR को फाइंड आउट किया जाता है. Even guys, IRR must be greater than minimum attractive rate of return, that you can say MARR of a company. कहना क्या चाह रहा है that IRR means internal rate of return must be greater than expected return. Okay, आप सिंपली कह सकते हैं कि MARR जो एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं कि यार मेरे को इतना रिटर्न मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट, सो दैट वी कंसिडर एज MARR and that must be equal or you can say that at least must be greater than MARR value. Okay, so IRR must be greater than MARR for getting good benefit too. So I hope clear guys. Let me come to one example. After that, it will be much clear to you. Suppose a person is planning a new business. The initial outlay and cash flow pattern for new business are as shown in the table. So this is basically cash flow they have given, and expected life of the business is 5 years. So expected life कितना business का 5 year. So find the internal rate of return for the new business. So what will be the internal rate of return, or basically what amount of return the company will give? You have to basically calculate. Okay. So they have given the questions of period 0, 1, 2, 3, 4, 5. For period 0 cash flow in rupees is minus 1 lakh, for 30 lakh. Okay, sorry 30,000 for second period, that is the 30,000, third 30,000, fourth 30,000, fifth 30,000. मीन्स स्टार्टिंग में भाई -1 लाख है. ओके, और यू कैन से जब स्टार्टिंग में तो हमेशा निगेटिव रहेगा क्योंकि बिकॉज दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट. ओके, तो पैसा अगर आप कहीं लगा रहे हो तो आपको निगेटिव में जाएगा. ओके, आफ्टर दैट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गेट रिटर्न दिस. सो यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. So let me come to the solution guys. So initial investment is what? 1 lakh. Okay, that's why I have created here negative. मैं already previous video में, अगर आपने previous lecture वगैरह नहीं देखे then you may face problem. Okay, so सबसे पहले आप previous lecture देखें so that you may not face any problem. क्योंकि मैं ये सब already बता चुका हूँ कि अगर initial investment करेंगे तो वो negative में रखेंगे. Okay, because you are investing somewhere. तो आपके पास भाई पैसा कमेगा. That's why here we are written in negative. Okay, so initial investment 1 lakh already given, annual equal revenue is rupees 30,000 and life 5 year already given in the question. Okay, now present birth function for the business is NPV. NPV का formula already मैंने बताया था. Okay, so minus 1 lakh plus 30,000
per year, means PAI interest they have already given, and for the time period 5. So just we have applied the formula of NPV. Okay, so 30,000 1 plus I to power n minus 1 and I 1 plus I to power n, where n is the year. I have already mentioned in the previous lecture 2. मैं डिटेल बहुत बताया हूँ इसके बारे में NPV कैसे कैलकुलेट किया जाता है, and I is basically interest. So just we have portrayed the value, and after that we have calculated the value. Okay, so I, that is the time period 5 they have already given, and interest rate basically, suppose let me consider the interest rate at 10. So after putting all that value, you can get the value as 13,724. So this is the basically net present value we have got. Now if I equal to 15%, that is moving to higher interest rate. Okay, so if you wanna move to higher interest rate, then just give their value. Okay, means just put 15 there. Okay, so you will get the value as 566. So NPV at 15% और net present value at interest rate 50%, but time period is same. Okay, क्योंकि time period दोनों में same है, but interest rate different है. Then we are getting the IRR as 566. So when I equal to 18%, now again little bit अगर move करेंगे 18%, okay, still higher rate, then NPV equal to what? Just put there here in the formula as 18%. Okay. So just after putting all that value, you can get the value as minus 6184. Means we have got the negative value. मैं ऑलरेडी बताया कि आप तब तक कैलकुलेट करना जब तक आप नेगेटिव मार्किंग को कंप्लीट न कर जाइए, क्रॉस न कर जाए. ओके, सो वी गॉट अ नेगेटिव वैल्यू एट 18% एंड अ पॉजिटिव वैल्यू एट 15%. ओके, सो ऑलवेज टेक द क्लोजेस्ट टू इंटरेस्ट रेट पॉसिबल. मीन्स एक भाई क्या है, निगेटिव वैल्यू कहां तक मिला, 18% में आपको निगेटिव मिला, बट 15% तक क्या पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा है. ओके, सो ऑलवेज टेक द क्लोजेस्ट टू इंटरेस्ट रेट पॉसिबल. सो क्लोजेस्ट टू इंटरेस्ट रेट होगा 18, 15, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. ओके, सो 18 क्लोजेस्ट निगेटिव है, सो विल बेसिकली कंसिडर एज क्लोजेस्ट टू मीन्स 18 15% को कंसिडर किए. ओके, सो IRR इक्वल टू एट 15% ना 56 माइनस 0, 56 माइनस 6184 and 18% minus 15%. Okay, so this we basically just apply the formula here and done the calculation. So IRR is basically 15.252%. Okay, so I hope clear है. आप बोलेंगे भैया how you have got the value of 566 6184, ये सब वैल्यू आप कहाँ से लिख रहे हैं. Okay, so 6184 because NPV we have already got that the minus 6184. Okay, and for that 15% we have already got the NPV as 566. Okay, so just we have put the value of NPV here. Okay, सो हम लोग वही यहाँ क्या किए, एनपीवी का वैल्यू जस्ट पुट किए, मीन्स एनपीवी को सब्ट्रैक्ट किए. ओके, एंड बेसिकली मल्टीप्लाइड विद 18% माइनस 15% जो कि डिफरेंस है. ओके, सो IRR निकालने के लिए सबसे पहले आप जो इनिशियल जो परसेंटेज है वो लिखेंगे, देन प्लस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था माइनस सॉरी जो इनिशियल आपको वैल्यू मिला, एनपीवी मिला, माइनस 0 वाई बिकॉज we are basically taking reference as a 0, so that's why we have done the subtraction minus 0 upon 566 minus 6184. मीन्स दोनों का जो वही एक प्रीवियस ईयर मीन्स 15% पे जो मिला और 18% मिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए एंड जस्ट वी हैव डन द कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन का. सो आई होप क्लियर. Let me come to the next example. That's example 2. Suppose a firm has identified 3 mutually exclusive investment proposal whose details are given below. Life of all the 3 alternatives is estimated to be 5 years with negligible salvage value. Minimum attractive rate of return for the firm is 12%. So find the best alternative based on the rate of return based on the comparison. Means आपको भाई यहाँ पर comparison करना है और मीन्स जिसका IRR ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. ओके, सो इसको कैसे अप्रोच करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड द IRR for both. Okay, alternative means for all 3 alternative, and after that for which alternative there is a higher value of IRR, we will consider that. Okay, so question में दिया गया that investment for first alternative is 1,50,000 and annual net income is 45,570. For second 2,10,000 and annual net income is 58,260, and for third 2,55,000 and 69,000 is annual net income. Okay, so let me go to the solution. After that it will be clear to you. So first of all, let me consider the alternative 3. Okay, so alternative 3 initial outlay that they have already given 2,55,000 and annual profit they have already given that is 69,000. So just we put in here the life of alternative is 3 year. Life of alternative is 5 year because in the questions they have already said that estimated life is 5 year. Okay, for everything. So just we have applied the now formula of NPV. But means first of all we have to calculate the NPV. NPV at the 12% with time period is 5. So initial investment was basically 2,55,000 plus 69,000, that is the annual profit you got, and we have to basically calculate at the 15% rate. Okay, so just you have to calculate that. Now
when I equal to 12%, when I equal to 11%, so you have to basically now find out the NPV value of all. Okay, so when I equal to 12%, so I equal to 12% means basically you have to calculate the NPV of 12%. So just we have applied the formula here and we have got the value as -6268. आपको बोलेगा भैया ये फॉर्मूला आप कहाँ से लाएं? सो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बताया कि एनपीवी कैसे निकाला जाता है. ओके, सो मैं इस वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, जस्ट वी हैव अप्लाई द फॉर्मूला एंड डन द कैलकुलेशन. सिमिलरली फॉर 11% वी हैव गॉट द वैल्यू. ओके, दैट इज द -17.1. ओके, सो now it is clear that IRR is less than 12%, that is less than MARR. So option 3 is rejected क्योंकि IRR less than IRR means क्या? It is clear that IRR is less than 12%. Okay, so less than MARR. MARR से क्या भाई? कम है, less than MARR. So option 3 तो हम लोग reject कर देंगे. Okay, I can also write that IRR of O3 equal to 11% approx, means approx 11% इसका रहेगा. Okay, सो अगर MAR में ऑलरेडी बताया कि MAR से अगर कम रहे देन उसको क्या करते हैं? रिजेक्ट करेंगे. ओके, क्योंकि बेसिकली कम से कम MAR से आपका ऊपर वैल्यू रहना ही चाहिए IRR का. ना सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द बेसिकली O2. ओके, और यू से ऑप्शन 2 इनिशियल आउटले दिया गया, एनुअल प्रॉफिट दे हैव ऑलरेडी गिवन, लाइफ 5 ईयर ऑलरेडी गिवन. नाउ जस्ट वी हैव अप्लाइड द फार्मूला ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो एनपीवी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस 5826 मींस 5826 एनुअल प्रॉफिट जो हुआ एंड एट इंटरेस्ट रेट 5 लगाएंगे देन यू विल गेट द वैल्यू एज 36048. गाइस ये आपको होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करना है एनपीवी खुद. मैं आपको आंसर दे दिया, 3.6048. ओके, एंड बेसिकली यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ P82. So when I equal to 12%, so you have to basically calculate here the value at 12%. So we have got the value 15.65. Similarly, if the interest rate is 13%, so we have calculated the value. Now rate of return for O2 is basically what? 12% plus 15.65 minus 0 upon 15.65 minus this value. Okay, so at rate of 13% minus 12%. So जैसे मैं previous question में मैंने subtract करके ये value निकाला था, similarly here we have applied the formula. Okay, so just we have done the formula here. Okay, means applied the formula here and we have got the value as this, that is the 12% approx. Okay, so project qualifies for comparison as IRR is greater than MARR. Okay, so IRR internal rate of return क्या greater than MARR, so it is basically qualified, or you can say yeah, it is good. Now similarly you have to basically calculate the means do the same things for alternative 1. Okay, that is the ON, and just you have to basically apply the formula of all that things. Okay, मैं हिंट भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपका ये होमवर्क है, खुद से करने की कोशिश करें. ओके, बट आपको थोड़ा मैं बेसिक सुनाता हूँ. दैट यहाँ अगेन इनिशियल आउटले दिया गया है 1,50,000. ये सब क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूँ. ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ये सब प्रोवाइड किया जा चुका है. ओके, इन दैट इज 1,50,000 एंड एनुअल नेट इनकम इज 45,570. सो जस्ट वी अप्लाई द फॉर्मूला ओके ऑफ एनपीवी and initial investment already plus this and applied the formula, we have got the value. Okay, so IRR equal to interest rate with positive NPV plus positive NPV minus negative NPV into difference between the interest rate. Okay, so आपको लग रहा है भैया IRR में ये हर एक पार्ट में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो दिस इज द फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला गाइस. ओके, आप ये फार्मूला को एकदम दिमाग में रख ले. ओके, बिकॉज दिस इज द बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, IRR का फार्मूला. ओके, so here basically IRR equal to interest rate with positive NPV plus positive NPV upon positive NPV minus negative NPV into difference between interest rate. Okay, so ये formula आपको simply लगा के भाई you have to basically calculate the value. Okay, so I hope clear. Now again similarly जैसे कि मैंने दो ऑप्शन में किया, इसमें भी वैसे करेंगे. when I equal to 12%, just you have to calculate the value. Okay, and after that basically you have to apply the formula of NPV. So just we apply the formula of NPV and calculated the value as 14,270. Now if I equal to 18%, okay, so 12% पे already मैंने निकाला. now I equal to 18%, then just you have to calculate the value of this. So similarly you have to basically calculate the IRR. So जो मैं formula already बताया. Okay, so by using that formula you have to basically calculate the IRR. So friends, ये formula जो मैंने बताया IRR का. Okay, just you have to apply this, that the interest rate with positive NPV plus positive NPV upon positive NPV minus negative NPV upon difference between interest rate. So यहाँ पर भाई ऑलरेडी वैल्यू में 12% है प्लस 1425 माइनस 0 बाय पॉजिटिव नेगेटिव माइनस इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी वी हैव डन एंड वी हैव डन द ऑल दैट थिंग. सो 15.8%. ओके, सो आप देख सकते हैं ON कितना मिला अपने को 15.8%, एंड फॉर द O2 वी हैव गॉट द वैल्यू एज 12% अप्रोक्स, एंड फॉर द O3 वी हैव गॉट द वैल्यू एज here basically we have got the value as 11%. Okay, that is basically
मीन्स वी आर बेसिकली नॉट एक्सेप्टिंग दिस बिकॉज दिस इज लेस देन MARR. ओके, सो MARR से इक्वल तो इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, बट इन कंपेयरिंग टू बोथ the more value of IRR is in the option 1, that is the 15.8%. So Q1 has the highest IRR, so ON, or you can say option 1, will be considered. Okay, so it will be basically a good alternative for the company. So friend, this is the complete lecture of economics for engineer. I hope your all doubt and your all query related to economics for engineering lecture is clear. Okay, if you are in doubt or anything, feel free to ask her, guys. So in this video basically we have discussed about the internal rate of return, basic concept of that, and diagrammatic representation, very important in context of your semester exam. Later we have gone through the important points that you should consider, and later we have basically go with the project selection. Simply आपको project selection में ये ध्यान रखना है कि जिसका IRR वैल्यू ज़्यादा रहा है, we will consider that IRR. Okay? And later we have do the comparison between MARR versus IRR. So at least MARR, okay, or you can say IRR must be equal to, or you can say at least must be greater than MARR. Okay, so यहाँ एक important objective आपको यहाँ बन सकता है that MARR should be greater than IRR or should less than IRR or equal to IRR. So you have to basically mark here that MARR, or you can say IRR must be greater than MARR. Later we have gone through the important question example. Nothing, we have just apply the formula of NPV and other important things and do the calculation. ये formula आप IRR का याद रखें, that is the interest rate और रिटर्न ऑफ इक्वल टू इंटरेस्ट रेट विद पॉजिटिव एनपीवी, मीन जो भी इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव एनपीवी आएगा प्लस पॉजिटिव एनपीवी अपॉन पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी इनटू डिफरेंस ऑफ बिटवीन द इंटरेस्ट रेट. ओके, सो जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू हैव टू कैलकुलेट द IRR, जिसमें IRR का ज़्यादा ऑप्शन मीन्स बेस्ट आएगा, वी विल कंसिडर दैट. So friend, this is the complete lecture of economics for engineering, and I hope that you have enjoyed all that video and you have learned the economics for engineering. Okay, so thus we have completed our economics for engineering playlist, and this is the basically last lecture, that is lecture 27. बहुत लोग भाई मेरे को कमेंट करते भैया आप ऑर्गेनाइजर का कुछ क्वेश्चन करवा दे. इफ आई विल गेट द टाइम देन सर्टेनली आई विल बेसिकली मेक सम मोर वीडियो, बट ऑफिशियली ये भाई इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. ओके, दैट इज इन लेक्चर 27 कंप्लीटेड. सो जैसा कि मैंने आप लोग से पता किया था, विद इन 15 नवंबर भाई आप लोग का इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया. ओके, सो जस्ट गिव लाइक दिस, और आप जरूर कमेंट करके बताएं, फीडबैक अपना दीजिए कैसा लगा आपका होल लेक्चर. ओके, कहीं अगर मेरे से अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हुआ देन फॉरगिव दैट. ओके, आई एम बेसिकली ट्राई टू लर्निंग मोर कंसेप्ट टू. ओके, आने वाले दिनों में भी अगर आपका कमेंट वगैरह अच्छा रहा देन आई विल ऑल्सो मेक द वीडियो ऑन अदर सब्जेक्ट टू. ओके, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट हेयर कौन सा सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कमेंट हेयर. ओके, सो दिस इज द थिंग्स, ऑल दैट थिंग्स फ्रॉम माई साइड. एंड गाइस, मेन चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग लेक्चर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को रिवाइज वगैरह करते रहे, देन इट विल बी क्लियर. ओके, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑलरेडी बताया कि दैट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा. मैं बार बार कह रहा हूँ हर एक लेक्चर में कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास फॉर्मूला ध्यान मिलेगा देन यू कांट एबल टू बेसिकली सॉल्व ऑल दैट क्वेश्चन. सो बी केयरफुल एंड ट्राई टू बेसिकली सॉल्व मोर क्वेश्चन, प्रैक्टिस some more theoretical question. Okay, because no one know that what type of question will came in the final semester exam. So this is all things from my side. Okay, must share this video with your friend so that other student can also get that इस तरह का कोई playlist है that will basically helpful for you too. Okay, and you can also join our WhatsApp Telegram group for getting notes of this subject and other subject too. Hope informative to you. Meet you in the next video. Thank you. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं.